Hello students, welcome to my YouTube channel CHSC Plus 2 Physics Brief Study in Quick Time। एटी छोट छोट वीडियो मु अपलोड करी चेष्टा करी डेली अपलोड करने जदि भल लगे तुम लाइक करदेव चैनल को और सब्सक्राइब करदेव तुम सांग मान को भी शेयर कर जो वीडियो मु पठेबी तार नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल रे प्रेस करदेव। गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियो ऊपर जो देखो 3 डॉट्स अच्छी ये वीडियो क्वालिटी बढ़ाई 144 रु मैक्सिमम जिते हो पार मुझे 480 करदेली तो वीडियो क्वालिटी बढ़ी प्रति वीडियो मु पीडीएफ नोट्स भी पठेबी तुम ताकू डाउनलोड कर पार जो डाउन एरो अच्छी या क्लिक कला तुम लिंक पाइज डाउनलोड कर पार। लास्ट इंपोर्टेंट जिनस मु सबू वीडियो यूनिट वाइज सजे देके रखी थी मो चैनल को क्लिक कला तुम प्ले लिस्ट ये बाहर करके तुम यूनिट वाइज पाइपर। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आम प्रीवियस क्लास रे योर कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस तापरे कार्बन रजिस्टर यहाँ पढ़ला। आज टॉपिक रे आम देखा रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल। ओके, कॉम्बिनेशन कले कौन हम तार। दिस इज ए वेरी टिपिकल लॉन्ग क्वेश्चन आ बहुत भल मार्क आसे। सो लेट अस स्टार्ट। देखो फर्स्ट केस आम देखा रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। सो रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल ऑफ देम। सो एटी फिगर रे आमे देखो तीनटा रेजिस्टेंस नहीं R1 R2 and R3। obviously as per the statement they are in series, those so the same current I flows through all of them, but the potential difference, individual potential difference are different, V1 V2 and V3 respectively। एवं ये जो टोटाल पोटेंशियल डिफरेंसटा कौन हम जो यही पॉइंट देखिपार यही पॉइंट आउ यही पॉइंट भितर टोटाल पोटेंशियल डिफरेंसटा है V। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर फिगर। सो आमे जानिछु फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू RI। सिमिलरली तुम इन केस ऑफ V1 V2 एंड V3 V1 हो IR1 जेहेतु I समान अच्छी, V2 IR2 V3 IR3 है। सो इफ कैपिटल R इज द रेजिस्टेंसेस ऑफ द कॉम्बिनेशन टोटल जो रेजिस्टेंसटा ताहले टोटल पोटेंशियल डिफरेंसटा केते हबो V इक्वल टू IR ऑब्वियसली। किंतु एज पर द फिगर देखिले जना पड़ुची जे V मस्ट बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, सो एठी आमे सेही इक्वेशनटा पुट करिवा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एवं तार रेस्पेक्टिव वैल्यू आमे पुट कर देले we can easily get the value of R। एठी I और I कैंसिल हो गला, so R comes out to be R1 plus R2 plus R3। so summation होची thus when a number of resistances are connected in series with each other the net resistance of the combination is equal to the sum of their individual resistances। है एटा आमे एठी रे एग्जांपल नीचु तीनटा रेजिस्टेंस रो मने करो n संख्यक रेजिस्टेंस हेले भी तुमरो R1 plus R2 plus R3 डॉट 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 अप टू Rn जाए एटा सीरीज चलिबो जोटा कि एठी समेशन शॉर्ट रे लिखिची है n संख्यक रेजिस्टेंस पाई तुमरो R आसी गला एटा R3 हेबोनी एटा R हेबो है। सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस R विल बी समेशन I ओवर Ri है एटा मु एडिट कर देबी। सो सेकंड केस अब हमें देखिबा रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। सो सीरीज पाई तुमरो दिस इज ए वेरी इंपोर्टेंट भाइबा क्वेश्चन। सीरीज पाई करंट सेम हुए पोटेंशियल अलगा हुए, पैरेलल केस पाई करंट अलगा हबो किंतु पोटेंशियल डिफरेंसटा सेम हबो। सो रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ डिफरेंट करंट फ्लोज थ्रू ऑल ऑफ देम एंड दे गेट एडेड आफ्टरवर्ड्स। सो एठी भी देखो फिगर है, फिगर आम बेटर बुझी पारिबा देखि पारथबो हमर मूल एटा I है। After entering this point A, it is divided into I1, I2 and I3. So the current through R1, R2 and R3 resistance are I1, I2 and I3. But A और B भितर potential difference is your V, okay, which is the same potential difference between R1 and R2 and R3, same potential difference है। So this is the parallel combination। okay, अच्छा एबे पुणी से कथा आमे करिबा ओम्स लॉ आमे यूज करिबा।
है जो V कहली आम टोटाल जो पोटेंशियल डिफरेंस है एज पर द फिगर इट इज इक्वल टू I1 R1 and it is also equal to I2 R2 and also equal to I3 R3. So এই इक्वेशन रो आम I1 I2 और I3 रो वैल्यू बाहर कर देला है ओके अच्छा ये वैल्यू को आम फर्दर यूज करवा बिकज फर्दर एटी ऐड हेबो एज पर द स्टेटमेंट है सो इफ R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन then I is equal to V by R obviously. So as per statement of the parallel combination total current must be the sum of the individual current है I1 plus I2 plus I3 हेबो so आम तार रेस्पेक्टिव वैल्यू पुट करदेले वी कैन इजिली कैलकुलेट फॉर द वैल्यू ऑफ योर R है सो लास्ट रे तुमर V और V कैंसल हो गला एठी एवं the total resistance comes out to be your 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Okay, thus if a number of resistances are connected in parallel, the reciprocal of the resistance, this is very important, reciprocal है total resistance no, this is the reciprocal 1 by R है reciprocal of the resistances of the combination is equal to the sum of the reciprocal of their individual resistances है गोटे गोटे जगार पिला भूल कर दियंती RHS टर्म को ठीक से लिखती किंतु LHS रे केवल R लिखिदेवे ताले इक्वेशन हमर भूल हो गला है सब किसी रेसिप्रोकाल ही तुम टर्म गुड़ा रही पैरेलल कॉम्बिनेशन है सिमिलरली एठी जदि n संख्यक रेजिस्टेंस हेले कौन हम n संख्यक रेजिस्टेंस हेले सेटा हमें मिक्स्ड ग्रुपिंग रे भल भाव बुझी पारिबा है एबे देखो मिक्स्ड ग्रुपिंग माने एठी बोथ सीरीज भी अच्छी एवं पैरेलल भी अच्छी as per the figure we have a grouping of similar resistances है for simplicity आमे similar resistances जार वैल्यू होची small r एई बळा रेजिस्टेंस नेचु small n संख्यक रेजिस्टेंस आमे नेचु which are connected in series ओके गोटे रो गोटे सीरीज को देखौची सो एई बळा टोटल केतेटा रो अछि small m संख्यक रो अछि that means there is small m number of parallel combination. So first of all we will calculate the series resistance for first row which will be the same value for the second row up to nth row because सब resistance जो individual तार value small r समान resistance लगी so प्रत्येक row पाई total resistance series पाई समान ही आसीबो हैला so ये देखो जदि हमें फर्स्ट रो रो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करबा को चाहूछु देन इट विल बी simple addition r plus r up to n संख्यक so this is nothing but n into r so nr is the resistance of each row है so if capital R is the resistance of the combination so m संख्यक resistance आमे देखो याकू एई फिगर को आमे analogously लिखि परिबा माने this is just like गोटे individual resistance एमती लागि छि हैला ओके individual resistance so parallel combination तमरो केतेटा अछि m संख्यक अछि हैला सो जो कथा कहउतली m संख्यक parallel combination हेले बे कोन हबो total resistance देखो सब individual resistance रो वैल्यू nr आसिला हैला series resistance जोटा nr so 1 by nr first row by 1 by nr second row by एमती total m संख्यक रो अछि so m times हबो that means it will be m by nr or r equal to nr by m okay so net resistance आमे जनरल फार्मूला पाइला is equal to the resistance यदि समान resistance अछि हैला into the number of resistances in one row and divided by the number of rows okay so ये गला तमरो series parallel और mixed grouping एबे देखो for the sake of क्वेश्चन सॉल्विंग एटा प्रॉब्लम रे एटा यूज हुए ए जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस मन कर आमे दुईटा रेजिस्टेंस नउछु R1 एंड R2 व्हिच आर कनेक्टेड इन पैरेलल हैला सो दैट पैरेलल कॉम्बिनेशन माने टोटल करंट हमर जो I एठी आस्ची डिवाइड हे गला गोटे I1 हैला गोटे I2 हैला पॉइंट A और B भितरे पोटेंशियल डिफरेंस V व्हिच इज इक्वल टू I1 R1 प्लस सॉरी I1 R1 also equal to I2 R2 है आमे जानिछु करंट जेतु डिवाइड हेगला सो I मस्ट बी इक्वल टू I1 प्लस R2 ओके I1 प्लस I2 हैला सो एठी आमे सेही कथा करिबा पोटेंशियल डिफरेंस जो I1 R1 इक्वल टू I2 R2 एथिरो आमे I2 रो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ I1 बाहर करिबा
है आपको आम पुट करदे कौटी आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू है सो आमर इक्वेशनटा आसो इन टर्म्स ऑफ आई वन है बिकज आमको आई वन दरकार इन टर्म्स ऑफ टोटल करंट सिमिलरली आई टू दरकार इन टर्म्स ऑफ टोटल करंट सो देखो यही इक्वेशन रू आम कौन करवा आई वन कैलकुलेट करवा सो आई वन कम्स आउट टू बी आई इंटू आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू सो सिमिलरली we can calculate I2 is equal to R1 I into R1 divided by R1 plus R2 so in general एबे हमें जनरल फॉर्मूला पाइला एटा जो ब्रांच कथा कहूची पिलाने एटा बहुत प्रॉब्लम आसे सो एई फॉर्मूला सहित पूरा एक्वेंटेड हो जाओ दिस इज द जनरल फॉर्मूला ओके ब्रांचिंग पाई टोटल करंट हबो केते माने करंट इन वन ब्रांच हबो केते टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड ब्रांच एटा पिला भी भूल कर दियंते रेजिस्टेंस ऑफ द सेम ब्रांच नहीं जानती नहीं रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड ब्रांच हबो डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस इन द टू ब्रांचेस देखो एठी फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट ब्रांच है फर्स्ट ब्रांच पाई करंट हला केते टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द अदर सेकेंड ब्रांच डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द टू ब्रांचेस ओके इजी अच्छा so if there is a combination of n resistances in parallel then also we can determine the current flowing through any one so if we consider a combination of those such resistances which are composed of one resistances through which current is to be determined then a second resistances the result will be of the order of n minus 1 resistances in parallel connected in parallel okay to each other okay सो यही टेक्निक रू आम एन संख्यक रेजिस्टेंस भी जब पैरेलल लगी ताले आम कैलकुलेट करें लास्ट किसी इंपोर्टेंट नोट्स जमती कहली इफ द करंट फ्लोज थ्रू अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस ओके कनेक्टेड इन ईच अदर दे आर इन सीरीज विथ ईच अदर ओके सेम करंट जदि फ्लो कला इन केस ऑफ दोज सीरीज कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट है Now, in case of parallel combination, the current will be divided into branches and it's summed up afterwards, passing through the resistance, and the potential difference will be same. Okay, ठीक अच्छे okay अच्छा now third point रे on connecting low resistance this is very important गोटे low resistance को केमती आमे कनेक्ट करछु ता ऊपर तमरो total resistance depend करे यदि गोटे low resistance को आमे parallel रे कनेक्ट कला with any resistance then it will result in decrease of resistance मन रखि था parallel रे तमे decrease हबो because तमरो reciprocally add होची series रे तमरो direct sum होची हैला so decrease हला resistance while connecting it with the high resistance across it so it doesn't make appreciable difference किंतु on connecting a low resistance in series with a resistance doesn't make an appreciable difference while connecting a high resistance in series माने गोटे हाई रेजिस्टेंस को आमे जदि सीरीज रे कनेक्ट करिबा ताले इंक्रीज हबो तमरो रेजिस्टेंस किंतु लो रेजिस्टेंस को सीरीज रे कले माने कनेक्ट किछि माने एते फरक पड़िबो नाही किंतु तार उल्टा होची थर्ड पॉइंट रे लो रेजिस्टेंस को पैरेलल रे कनेक्ट करले बहुत किछि फरक पड़िबो किंतु हाई रेजिस्टेंस को पैरेलल रे कनेक्ट करले एते फरक पड़िबो नाही ओके थैंक यू